Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about waves and tides and ocean currents. Children, before moving ahead, I want to ask one question from you. From where we get minerals in large quantity? So, to get the answer of this question, let us move ahead towards our next topic, that is importance of oceans to man. The oceans facilitate countries and regions to trade with one another. ओशंस बच्चे हेल्प करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ और रीजन्स को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट. Goods can be moved in a very large quantity by ships and the transportation is cheaper than any other mode of transport. So बच्चे water transport is cheaper than any other transport. Okay. बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जा सकती हैं, मंगाई जा सकती हैं या भेजी जा सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. ओके. द मैरिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ फॉर फूड एंड ट्रेड इन अबंडेंस. मरीन एनवायरनमेंट बच्चे एनिमल एंड प्लांट लाइफ को फूड और ट्रेड के लिए अबंडेंस में प्रोवाइड करवाता है. ओके. ओशंस आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड. ओशंस वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड होते हैं बच्चे. एंड बच्चे सम ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल सोर्सेज आर आल्सो फाउंड इन द ओशन फ्लोर. बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो ओशन फ्लोर पे मिलती हैं हमें, सच एज मिनरल ऑयल, मैंगानीज, नोड्यूल्स. नोड्यूल्स क्या होते हैं बच्चे? स्मॉल राउंडेड लंप ऑफ मिनरल सब्सटेंस. ये मिनरल्स की तरह ही होते हैं. ओके. गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट आर सम ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशंस. Several countries are tapping mineral oil as a source of energy in a big way. However, the exploitation of the deep ocean floor as a source of mineral is still at an early stage. जो मिनरल ऑयल है बच्चे वो लार्ज क्वांटिटी में आपको ओशन में ही मिलेगा. ओके. रीज़न बीइंग ओशन में बच्चे जो सी क्रीचर्स होते हैं उनके जो कॉप्स होते हैं, उनकी जो स्केल्टन होती है वो वहीं पे ही बरी हो जाती है ओशन में ही और वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके. जबकि लैंड में क्या है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा है लैंड पे, सो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं है इन कंपैरिजन टू ओशन. ओशन में जो भी सी क्रीचर है, जो भी चीज़ एक बार ओशन में गिर जाती है वो नीचे बरी होके फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है. सो देर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल ऑयल इन ओशंस. ओके. तो अभी तो अर्ली स्टेज पे ही है बच्चे ओशन से मिनरल ऑयल निकालना. ओशन में अभी तक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अबंडेंस में है. ओके. And in future it is hoped that the oceans will serve as a major source of valuable resources. और future में ये माना जा रहा है कि oceans जो हैं valuable resources के major source बनेंगे. Okay. Then there comes बच्चे case study of tsunami. As I have told you about tsunami, huge sea waves are called tsunami, which is a Japanese name बच्चे. अगले पेज पर do you know में भी दिया है. These waves are caused by the earthquake, underwater volcanic eruption, or any other such severe disturbance. Okay. So, बच्चे, in December 2004, gigantic waves, the likes of which were never seen before, crashed into the coastal regions in many parts of the world, washing away people, animal, and homes. There were unprecedented losses, and the whole world watched in horror. बच्चे दिसंबर 2004 में इतनी बड़ी वेव्स आई जो किसी ने कभी भी नहीं देखी थी. कोस्टल रीजन्स में क्रैश कर गई, पूरे वर्ल्ड में अपने साथ कितने ही लोगों को बहा कर ले गई बच्चे, एनिमल्स एंड होम्स. कुछ ही मिनटों में बेटे सब कुछ बहा कर ले गई. इन होल वर्ल्ड देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था बच्चे डर से बस सुनामी को बस देखता ही रह गया. दुनिया डर से कांप गई थी बच्चे, क्योंकि किसी ने ऐसी बड़ी वेव्स पहले ना देखी थी ना सुनी थी. गॉट इट. गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प करना चाह रही थी बट पहले कभी सुनामी आई नहीं थी, इसीलिए कोई भी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस मेजर्स नहीं थे. चिल्ड्रन, लुक एट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस सुनामी. सच अ हॉरिबल सीन वी हैव नेवर सीन अगो. पहले ऐसे डरावने मंजर कभी भी नहीं देखे होंगे किसी ने बच्चे.
लुक एट हियर, कितनी gigantic waves थी, कितनी ऊंची उठती हैं ये. Look at here, huge loss of life and property. So children, let us watch a video in which tsunami related awareness is given to you. It can be many miles high, from 1 to 100 feet high, traveling at 400 miles per hour. This ocean monster is known as tsunami, which can wreak havoc on coastal populations and landscapes. Tsunami is a series of ocean waves caused by any large and sudden disturbance of the sea surface. Tsunamis can be generated by landslides, volcanic eruptions, or even meteorite impacts in the ocean, but they are often caused by earthquake, where there is a sudden displacement of the ocean floor. When that happens, there is transfer of energy from the sea floor from the oceans, causing waves on the surface to radiate outward in all directions. In deep waters, these waves may not even be detectable. But when the tsunami enters shallow waters, the wave speed slows and its height increases. The water along the coast may recede noticeably. A large fall of turbulent water called a bore may also form. When the tsunami hits, it may come ashore like a fast rising flood and strike with devastating force. This series of waves may continue for hours. The first one may not be the last or the largest, or for your safety, know the potential warning signs of incoming tsunami. A strong earthquake that causes difficulty standing, a rapid rise or fall of the water along the coast, a loud ocean roar. When you are in the coastal areas, it is important to keep alert for messages from local officials. If you find yourself in a location of a tsunami, then keep calm. Walk or run to the higher ground, 100 feet above sea level or 1 mile inland. Do not drive. Keep roads open for emergency vehicles. If you can't move, then use the stairs to get the third floor or a higher in a building. Follow the instructions from local officials. Stay out of coastal areas. Tsunamis can strike any coastline in the world and can affect locations thousands of miles away from where they formed. They may be uncommon, but the devastation they cause makes them a deadly force in nature. Stay safe. So children, in the video you have seen the worldwide destruction due to this tsunami. बच्चे, पानी 50 to 60 किलोमीटर्स तक अंदर आ गया था कोस्टल एरियाज़ में. सो आप भी सेफ रहे जब ऐसी साइट्स पे जाएं. अगर आपको कहीं पे बीच कम होता नज़र आ रहा है, बीच का एरिया पानी से भरता जा रहा है और आपको कुछ स्ट्रेंज जैसी वेव्स दिखाई देती हैं, सो प्लीज़ इसे एक सिग्नल माने सुनामी का. ओके, एंड शांत रहें उस टाइम और हायर ग्राउंड्स की तरफ जाने की कोशिश करें और वार्निंग्स को सुने लोकल एरिया की. बच्चे, in 2004 there was no such facility like tsunami signal and other facilities regarding to tsunami. बच्चे, ड्यूरिंग 2004 जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs जो थे एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, शॉपकीपर, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सब ने रिलीफ फंड प्रोवाइड किया. बच्चे, प्रोवाइडेड रिलीफ टू द विक्टिम्स बाय डोनेटिंग मनी, क्लोथ्स, medicines, bedding, tents, etc. And media also played an important role in mobilizing public help for the victims. और मीडिया ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था बच्चे उस टाइम, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड तो नहीं थे सुनामी के लिए, क्योंकि पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था. बट अब बहुत कुछ हो चुका है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स खुल चुके हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में. कोस्टल एरियाज़ के पास बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स कर दिए हैं. ओके, बट एट दैट टाइम द सीन वॉज टोटली हॉरिबल. ओके, पर फिर भी बच्चे, सारी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज और लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की विक्टिम्स की उस टाइम पे. ओके, सो बच्चे, आप भी कभी ऐसे सी कोस्ट के पास जाएं, देन बी कॉशियस. ओके, थोड़ा ध्यान रखें अपने आसपास का.
देन डू यू नो में बच्चे सुनामी की डेफिनेशन है। देन नेक्स्ट पिक्चर में havoc caused by tsunami, and in the last pic there's given areas affected by tsunami, जो mostly affected areas थे सुनामी से, these are given over here, such as इंडोनेशिया जो था बच्चे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इंडोनेशिया में, एज यू कैन सी 1,68,000 डेड और मिसिंग हो गए बच्चे वहाँ पे पीपल, ऑलमोस्ट पूरा ही इंडोनेशिया जो था वो पूरा वाटर में था। ओके एंड चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हेयर देयर इज़ द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, फिर यहीं से सुनामी वेव्स जो थी ओरिजिनेट हुई थी, एज यू कैन सी इतने दूर से। ओके एंड बच्चे ये 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जो कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है इतने डिग्रीज पे। ओके एंड श्रीलंका में भी आप देख सकते हो 31,000 पीपल डाइड, थाईलैंड में 5,400। ओके एंड इन इंडिया देर वर ऑल्सो 18,000 डेड और मिसिंग पर्सन्स, ओके, ड्यू टू दिस सुनामी। सो this tsunami caused a huge destruction of life and property बच्चे। So children, stay aware, stay safe and be cautious during this type of havoc, okay? So that's all in today's topic. Revise your topic, okay?